Okay, so let us start with the discussion. As I mentioned in my message that today we are going to talk about the React hooks. Okay, so let me just share the screen and let me give you the idea that what we are going to learn. Okay, so if you will consider this. Uh, why I'm taking this topic because we were in somewhere the on chapter number 14 or 15 chapter number we were having. Okay, so these are the very small topics which is been remaining. Okay, so without means if you know the basic concept of the component, then also you can learn these remaining two chapters. Okay, so for that purpose, I have decided to uh, go with the React hooks. Okay, and we will learn about the React hooks in this chapter. Okay, so we are starting with the theoretical discussion, that is React hooks. But before I start, let me know means let me just know that I am having few questions. Okay, and you need to answer those few questions. My very first question is that what are the two types of component that is been available uh, in React? Class component and function component. Hello. Yes, sir. So there are two types of these components. One is function and another is class based. One is function based component and another is a class based component. Right. Okay. And if I will say that that what are the advantages of using the function based component and what are the advantages of using class based component, then what can be your answer? Very first, let me know the what are the advantages of using function based component. So function is means function is very easy to use and Yeah, easy to handle it. it is a stateless component. Okay, Yes, it's so stateless and we don't have to use the constructor and this super and all right, things. right, means we don't need to directly we can initialize any object or any variable, we can directly initialize that. Okay, but if I will consider the class based component, then the class based component are they are the stateful component, means they are having their own state. Okay, but having own state is one type of the advantage, but there are certain types of the limitations are there in class based component. Okay, so very first we will to learn the React hook, we will go through the very first we will go through the limitations of the class based component, or what are the limitations of the class based component. You can say the limitation as an disadvantage, but we can overcome this disadvantage by using certain type of the aspects. Okay, so very first disadvantage is that it is very confusing, means initially you might be you have also experienced this. Okay, that when you use the class based component at the beginning it was a confusing. पहले जब आप स्टार्टिंग में जब आपने यूज किया होगा तो वो बिगिनिंग में एक एक क्या था, एक तरीके का एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक जनरली आदत होती है कि सिंपलेस्ट टास्क अगर हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो सिंपलेस्ट टास्क परफॉर्म करते समय हम लोग वहाँ पे
we use the function based component, and at the earliest also, means majority of the developers prefer the function based component. बहुत सारे developer वहाँ पे function based component को use करते हैं, right? Because it is simple to use. But class based component we prefer whenever we are going to use the some write some complex logic. लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक जब हम लोग लिखते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक इट इज अ वेरी पर्टिकुलरली फॉर द बाइंडिंग एनी फंक्शन, क्योंकि क्लास एक स्पेशल फंक्शन रहती है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, और इसी कंस्ट्रक्टर्स के मदद से आप लोग किसी भी वैल्यू को बाइंड करते हो। ओके। दूसरा कंफ्यूजन ये था कि आपने जहां जहां पे आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज किया है, वहां वहां पे आपने बाइंडिंग के लिए किसी भी फंक्शन बाइंडिंग के लिए या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट को या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को बाइंड करने के लिए आप लोगों ने वहां पे दिस कीवर्ड का यूज किया है। जो जो दिस कीवर्ड क्या करता है, जो दिस कीवर्ड एक इंस्टेंस को बाइंड करके देता है। ओके। सो दैट इज आल्सो कंफ्यूजिंग टू यूज द दिस कीवर्ड, क्योंकि पहले तो बहुत बार ये समझ में ही नहीं आता है कि मुझे दिस कीवर्ड यूज कहाँ पे करना है। ओके। वेयर आई कैन यूज द दिस कीवर्ड, और मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इज एग्जैक्टली द यूज ऑफ दिस कीवर्ड, ये तो बहुत बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ओके। सो वी कैन एलिमिनेट दिस यूज ऑफ दिस, क्योंकि दिस एक रेफरेंस देता है हम लोगों को कीवर्ड, दिस कीवर्ड ये हम लोगों को एक रेफरेंस देता है। इस दिस कीवर्ड के दिस कीवर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ हुक। अगर हम लोग वहाँ पे हुक का अगर कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, तो वी कैन एलिमिनेट दिस कीवर्ड। ओके। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कि जब हम लोग हुक्स यूज करेंगे, रिएक्ट की जब हुक यूज करेंगे, ये हुक हम लोगों का जो जो पर्टिकुलरली अगर मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट अगर यूज करना चाहता हूँ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से हमारी लॉजिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हम लोग सिंपलेस्ट मेथड से लिख सकते हैं बाय विदाउट राइटिंग द दिस कीवर्ड। हम लोग दिस कीवर्ड्स का बिना भी उसी लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली हम लोग जब दिस कीवर्ड को यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग जब स्टेट को यूज करते हैं या फिर प्रॉप को यूज करते हैं या फिर आप लोगों को यूनिडायरेक्शनल डेटा को बाइंड करना रहता है, ऐसे समय आप क्या करते हो, ऐसे समय वहां पे दिस कीवर्ड का यूज करते हो। बट विदाउट दिस कीवर्ड ऑल्सो वी कैन सर्वाइव बाय यूजिंग द हुक्स। ओके, हुक से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, और मैं तब तक एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, क्योंकि एक हैबिट रही है अभी तक की कि हैबिट में मैंने हर एक चैप्टर के लिए एक नया एक वी हैव इनिशिएटेड विद द न्यू चैप्टर। ओके, हम लोगों ने वहाँ पे नए चैप्टर से इनिशिएट किया है। ठीक है। सो हियर ऑल्सो आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, हम लोग नाम देते हैं रिएक्ट बुक्स। टिल दिस इट विल बी क्रिएटेड, जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके। So just tell me, is it clear that what is the importance of the hook? यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे लर्निंग आउटकम क्या होने वाले हैं, ये क्लियर है? यस सर। यस आकाश। Yes, sir. ओके, फाइन। सो shall I continue with the discussion? ओके, तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिफोर
16th वर्जन, बिफोर द रिएक्ट वर्जन ऑफ द 16, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 18 वर्जन के आगे का यूज कर रहे हैं रिएक्ट। ओके, बट बिफोर 16.8 वर्जन देयर वेर द नो कंसेप्ट ऑफ द हुक। ओके, अगर आपको याद होगा तो ES6 के जो फीचर है वो 2015 के ऑनवर्ड्स चालू हुए हैं। ES6 के फीचर से हम लोगों ने आगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करना चालू किया, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास ये कीवर्ड ES6 से ही जावास्क्रिप्ट के अंदर आया है, या फिर उसको बोल सकते हो आप रिएक्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो 16.8 वर्जन के आगे क्लास को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि अगर एक स्टेटफुल कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज द स्टेटफुल कंपोनेंट, बट राइटिंग द लॉजिक विद द क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज क्वाइट टीडियस। ओके, मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जॉब होता है, टीडियस जॉब होता है जब हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं। स्पेशली मुझे दिस कीवर्ड को यूज करने के लिए मुझे एक प्रॉब्लमेटिक लगता है। ओके, so for that reference we have means they have in a React they have introduced the concept of the hook in 16.8 version, जो हमको क्या करता है कि अगर मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी, तो उस इनिशियल स्टेट को सेट करने में हम लोगों को मदद करता है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने यूज स्टेट में भी पढ़ा है। ओके, वी हैव यूज इट इन द यूज स्टेट। यूज स्टेट का अगर आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आप, बट ऑब्वियस आपका आंसर रहेगा कि यूज स्टेट हम लोग इनिशियल स्टेट को सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस किया है जब आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की एक ऐप बनाई थी, वहां पे आपने यूज स्टेट को यूज किया था, जिससे आप कंपोनेंट की इनिशियल स्टेट को क्या करते हो वहां पे, कंपोनेंट की इनिशियल स्टेट को आप लोग वहां पे सेट करते हो। ओके, तो there are the two popular hooks are there in React। पहला है यूज स्टेट और दूसरा है यूज इफेक्ट। ओके, तो पर्टिकुलरली हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, यूज स्टेट हुक और दूसरी चीज हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक। ओके, सो वी विल गो थ्रू टू एग्जांपल्स, दो अलग अलग एग्जांपल से जाएंगे, यूज स्टेट और दूसरा हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि जो रिलेटेड रहेगा यूज इफेक्ट से। ओके, तो ये हमने पहले भी किया है, लेकिन मैं एक सिंपल एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द एप्लीकेशन। अभी मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। एवरीथिंग आई विल क्लियर फ्रॉम द फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। मैं यहाँ से सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay, and will in terminal I will just open the application। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे with the help of npm start। Okay, so this application it is been started। now I will explain the logic। क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है जिसमें हम लोग रिटर्न के अंदर एक वैल्यू को बाइंड करेंगे। ओके, तो इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक वैल्यू को बाइंड करते हैं। ओके, so let us bind here over here the return value। मैं h1 के अंदर बाइंड कर लेता हूँ इसको। फाइन, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू
React.js. ठीक है, विथ वन वार्निंग इट इज बीन कंपाइल्ड। यहाँ पे आप लोगों को ये वेलकम टू React.js दिख रहा है। ठीक है, दैट दिस यू हैव डन बिफोर ऑल्सो। ओके, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो React.js जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ। आई वांट टू बाइंड इट डायनामिकली। ओके, सो आई विल बाइंड इट विद द सर्टन नेम। ओके, मैं इस नेम को बाइंड करना चाहता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एक एरर दिखाई देगी, अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम लोग जनरली ऐसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लेते हैं। ओके, और कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। राइट, सी माय प्रोग्राम इट इज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे वो सब्जेक्ट का नाम अभी दिख रहा है। ओके, इफ आई विल चेंज दिस, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, ये सब्जेक्ट के नाम को चेंज करूंगा, so then this also is going to be changed. See, okay, so this is how generally traditionally we use. Okay, अभी आप मुझे बताएंगे कि ये जो कंपोनेंट, ये जो बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट हुई है, इस कंपोनेंट की ये कौन सी कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट की कुछ स्टेट है या नहीं है, whether means which type of the component it is that, and whether that component having a state or not. Yes, function based, sir. it is a function based component, whether it is having some state. Initial state we have declared name, no? So whatever the state we will give, it will accept it, sir. But there is one type of confusion that I am using the function based component, Yeah, and we have learned that function based components are the stateless components. So how we can say that it is having some state? the initial value it is showing, no, sir, name. Okay, yeah, it is the initial value we have declared, but Yeah, it has been declared by us only. how we can say that it is a stateful? It is having initial state. In initial state we have given it, no? Right, means My class. by default, yeah, it is clear. Okay, right. But by default So it is useless, it is stateless. stateless. It is stateless, means it is a function, means function, any function based component by default it is stateless. But if we will declare any variable, it is its initial state is going to be set. Right, sir? Yes, sir. Yeah. So this thing I want to handle with the hook. Okay, so how I can handle it with the use state hook? Okay, means I don't want to use the variable. Okay, instead of this variable, I want to declare its initial state. Okay, so what I will do, I will just simply will create an array over here, and will use the name. Okay, and we'll say that it is a we will use it as an user state. Okay, so we are using the concept of use state. So that initial state we have written. Okay, so now the initial state is considered to be considered, means we have state the initial state, but in outcome I am having only the statement that value is not bind. ये वैल्यू वहां पे बाइंड नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है,
तो स्ट्रिंग वैल्यू को मैं अगर बाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को बाइंड करना चाहता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल if I will just bind the string value, for example, if let's say that I will use the React JS. Okay, then that string value is going to be bind again here. If I will change this value, okay, from a let's say I have used the instead of string, I have used it as a number. So you can see that initial state is set to the number, right? So this is how these hooks are in React hooks are going to be used. Means how it is meaningful. Okay, see, we are using the stateless component. हम लोग वहाँ पे stateless component use कर रहे हैं. Fine. And in stateless component, we can state the initial state of the that particular component by using the any initial value. Okay, हम लोग इस initial value को हम लोग set कर सकते हैं, right? Okay. Now the this is a concept of the simply using the that particular use state. Okay, ये बेसिक यूज है यूज स्टेट का. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आई वांट टू चेंज दिस स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन. मैंने इनिशियल स्टेट तो अभी सेट कर ली, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वहां पे एक इनिशियल स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ एप्लीकेशन की. ओके, एंड आई वांट टू क्रिएट वन इवेंट. मुझे अगर इनिशियल स्टेट को अगर चेंज करना है तो हम लोग इसको इवेंट को वहां पे लिखते हैं, राइट? ओके, सो आई विल जस्ट यूज द इवेंट ओवर हियर. ओके, अभी मैं इसको इवेंट लिखता हूँ. ओके, सो हियर आई विल create a button because I want to write there the event. Okay, इस बटन का नाम हम लोग देंगे क्लिक मी. So see, I am having that button. Now my basic need is that if I will just click on the click me, then this initial state should be changed. Okay, so what I will do here, I will write one event. कौन सा event लिखेंगे? We will write there the on click event. Okay, now here I don't want to use the any event. Okay, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा या फिर एरो फंक्शन को यूज करूंगा. ओके, so I will use there the arrow function. Okay, so I will set it as an a function. We'll say it as an this is a arrow function. We'll initiate a method set click. Okay, and inside that I will pass the name plus 1. I am having one error because I have not declared the set click. Okay, so I will declare this one also set click. Okay, so now let us try this. So see, whenever I am just writing or whenever I am just clicking on the button, the initial state is going to be changed. Okay, तो initial state क्या हो रही है, change हो रही है, right? So this is how your two purpose has been solved. यहाँ पे आपके दो पर्पज सॉल्व हो गए. पहला पर्पज क्या कि पहला पर्पज आपने उसको एक इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, मींस यू हैव स्टेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट. दूसरा पर्पज जनरली टू सेट द इनिशियल स्टेट, क्योंकि आपको अगर स्टेटफुल कंपोनेंट यूज करने तो आप जनरली क्या करते हो, आप जनरली
एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हो, लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट की लॉजिक क्या है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट की लॉजिक ये है कि वो लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स होती है. It is complex. You will use the you will use the class based component. उसके बाद आप this keyword का यूज करोगे, this keyword को bind करोगे, constructor का यूज करोगे, तो your logic is going to be lengthy. आपका जो लॉजिक होता है वो लॉजिक क्या होता है, लेंदी होता है. ओके, वहां पे आप दिस कीवर्ड का यूज करते हो, और जब भी आप दिस कीवर्ड का यूज करते हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. ओके, जिससे आपके स्टेट के ऊपर भी डिफरेंस आता है, प्रॉप के ऊपर भी डिफरेंस आता है, जो आपका डेटा फ्लो है उसके ऊपर भी डिफरेंस आता है. ओके, so I can use this logic again and again and again. Suppose if somewhere I want to use the same logic, ये जो stateful logic है, ये stateful logic मैं किसी दूसरी जगह पे भी यूज करना चाहता हूँ, there also I can use this stateful logic. Okay, means it is a reusable. This logic is considered to be the reusable. Okay, so I don't want to write that this keyword again and again. I don't want to bind that value again and again and again with the help of hooks. Okay, so this is a basic benefit of using the hook. Okay, कुछ अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जनरली, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंस में देखा था कि जनरली हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट तब लिखते हैं जब मुझे कोई कोई एक कॉम्प्लेक्स कोड को ट्रीट करना रहता है, तो कॉम्प्लेक्स कोड को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं. तो इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग वहां पे उसकी जगह पे जनरली कोई अगर इवेंट है, आपको डेटा एक्सटर्नली फेच करना है या फिर डेटा को एपीआई से आप फेच कर रहे हो, ऐसी जगह पे भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे यूज कर सकते हो किसका, यूज यूज स्टेट का यूज कर, या यूज स्टेट या यूज इफेक्ट. ये जो दो हुक्स है, पर्टिकुलरली दीज आर द टू फेमस हुक्स. ओके, so that we can use to simplify our scenarios or to simplify our code. Fine. इसका तीसरा भी बेनिफिट है. तीसरा बेनिफिट ये है, मुझे बताइए, अगर आप जब आपने लाइफ साइकिल के बारे में जब पढ़ा, लाइफ साइकिल हुक के बारे में जब पढ़ा आप लोगों ने, ओके, कौन कौन सी लाइफ साइकिल पढ़ी आपने? विच लाइफ Mounting, साइकिल? updating, unmounting. राइट, माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट. ओके, उसमें भी आपने कुछ लाइफ साइकिल देखी, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट अपडेट. ओके, कंपोनेंट अपडेट. जनरली वहां पे हमने आपने क्या किया था, वहां पे हम लोगों ने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करके वहां पे ये सारे सिनेरियोज देखे थे. ओके, तो अगर मैं एक हुक का कंसेप्ट अगर यूज करता हूँ तो मेरी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है? आई डोंट वांट टू, और आई विल नॉट यूज ओवर देयर द, आई विल नॉट go for the whether I will checking that whether it is been mount or not mount. I means whether it is updating. Okay, so that I don't want to use. Okay, ये मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी. Fine. So indirectly you are, means you will have the, by writing a simple logic, ये simple logic use करके आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आप सिंपल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हुक. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द हुक. ओके, ये एडवांटेजेस क्लियर है? Or if you are having any doubts you can ask. Okay. सर हुक म्हणजे काय? Yes, Vaishnavi. हुक का मतलब क्या होता है?
Please repeat the question. I have not heard it properly. हुक का मतलब क्या होता है सर? हाँ हाँ, हुक का मतलब क्या होता है? ओके, वेरी सिंपल। हुक, हुक हम लोग क्या कहाँ पे यूज करते हैं? अगर मुझे कुछ कहीं कुछ अटैच करना है तो वहां पे हम लोग हुक यूज करते हैं, राइट? ओके, सो द वर्ड itself hook, it is nothing but it is been means if you want to bind any function, ओके, या फिर आप अगर कोई कोई भी अगर एक स्टेट अगर यूज करना चाहते हैं या फिर लाइफ साइकिल को आप कंपोनेंट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वहां पे आप हुक्स यूज कर सकते हैं। ओके, हुक जनरली हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर एक अल्टरनेटिव करके यूज करते हैं। ओके, बिकॉज इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट मुझे बहुत सारे फंक्शन, क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस को एक जगह पे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो ऐसी जगह पे हम लोग ऐसी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, सो देयर यू कैन यूज एज एन अल्टरनेटिव एज एन हुक। ओके, वहां पे आप अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हो? हुक यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है वैष्णवी? यस सर। Okay. अभी हम लोग कुछ हुक कहाँ पे यूज, मतलब विच आर द रूल्स टू यूज द हुक? ओके, हम लोग कुछ अभी ये ऐसा नहीं कि हुक हर एक जगह पे मैं यूज करूंगा। ओके, where I can use the hook, that I'm going to demonstrate, that I'm going to go into. Okay, हुक कहाँ पे यूज नहीं करना है? फाइन, सबसे पहली बात तो हुक जनरली अल्टरनेटिव है क्लास बेस्ड कंपोनेंट को। कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल करने के लिए हम लोग हुक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हुक जनरली लूपिंग के अंदर यूज नहीं करते। क्यों लूपिंग के अंदर यूज नहीं करना? मतलब कहीं पे अगर कंडीशन है, नेस्टेड कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यूज बनाया है, या फिर फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शन है, ऐसी जगह पे हम लोग हुक यूज नहीं करते। क्यों? बिकॉज वेरी सिंपल, जनरली लूप हम लोग इटरेशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज अगर इटरेट होगी तो ऑटोमेटिकली ऐप की जो स्टेट होती है या फिर ऐप की जो वैल्यू होती है वो स्टेट चेंज होती रहती है। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी चेंज अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द इटरेशन। ओके, सो बाय यूजिंग controlling the hook or controlling the state we can do by using hook। okay, लेकिन वो अगर वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है कंडीशनल बेसिस के ऊपर, ऐसी जगह पे हुक बेनिफिशियल नहीं रहते। ओके, बिकॉज हुक्स कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट। हुक इनिशियल स्टेट को सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको इनिशियल स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो वी विल नॉट यूज दैट हुक इनसाइड अ लूप, या फिर कोई अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग हुक को यूज नहीं करेंगे। ओके, दूसरा रूल, हुक शुड सिट एट द टॉप ऑफ द लेवल ऑफ योर कंपोनेंट। ओके, इसका मतलब क्या कि वेरी सिंपल। ओके, जब हम लोग ये यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने यूज स्टेट का यूज किया, ओके, देखो इसको इसको टॉप पे इसको इंपोर्ट किया है हमने। before the use of the function, before you starting of the class, okay, or before the start of the component, not the class। okay, so before the start of the component we need to import that, क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक तरीके की लाइब्रेरी है, तो उस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन है, एक्सटर्नल फंक्शन है, तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एट द टॉप यू नीड टू डिक्लेयर, इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड रूल इज दैट only call hooks from react functional components। ओके, हम लोग इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज नहीं करेंगे।
we will not use this in a class based component. हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? हम लोग इसको एज एन अल्टरनेटिव, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का अल्टरनेटिव, क्लास बेस्ड कंपोनेंट की इनिशियल जो भी स्टेट है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हुक को कॉल करेंगे. वी विल जस्ट कॉल द हुक only in function based component, and this is only the reason why many developers prefer to write only the function based component. इसी वजह से फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिंपल रहती है. कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो by using the function based component. Okay, so we will use the hook only in function based component, not in a class based component. हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है. Then the next thing is that never call a hook from regular function. रेगुलर फंक्शन से हम लोग इसको कॉल नहीं करेंगे. रेगुलर फंक्शन मतलब क्या? व्हाट इज रेगुलर फंक्शन? यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन फंक्शन का नाम है कि कंपोनेंट का नाम है? व्हाट इट इज सिग्निफाइंग? It is this keyword is signifying that we are using the function based component. ओके. लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग कोई अगर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग हुक को यूज नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज द हुक इन अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट. फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग, सॉरी, वी विल नॉट यूज द हुक इन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. जो फंक्शन यूजर डिफाइंड हुआ है वहां पे हम लोग यूज नहीं करेंगे. ओके, वी विल नॉट यूज दैट. ओके. देन हुक्स कैन कॉल अदर हुक. एक हुक दूसरे हुक को कॉल कर सकता है, क्योंकि हम लोग अगर जहाँ पे इटरेशन करना चाहते हैं या फिर रिकर्शन करना चाहते हैं, ऐसी जगह पे रिकर्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे हुक को यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द हुक फॉर द टू कॉल द अदर हुक. ओके, हम लोग एक एक हुक के अंदर दूसरे हुक को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. फाइन. जनरली किसी भी एप्लीकेशन में दो ही हुक यूज होते हैं. एक होता है यूज स्टेट और दूसरा होता है यूज इफेक्ट. ओके, हमने यूज स्टेट तो देख लिया. यूज स्टेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इनिशियल स्टेट को या फिर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में डॉम एलिमेंट को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, ओके, तो ऐसी जगह पे आप क्या करते हो, हुक का कंसेप्ट यूज करते हो. ठीक है. लेकिन हम लोगों ने दूसरा जो हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट, ओके, इसको अभी तक नहीं देखा है. ओके, बट बिफोर आई विल मूव अहेड, जस्ट टेल मी, यूज स्टेट ये जो हुक है ये क्लियर है? Yes, sir. ओके. Anyone having any difficulty, and you would like to ask any question about the use state? If no question, can I proceed for the use effect? Okay. So use effect हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? Where we will use the use effect hook. Okay. जैसे मैंने इसके पहले भी बताया है कि जनरली हम लोगों को जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को माउंट करने के लिए या फिर कंपोनेंट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लाइफ साइकिल को यूज करते हैं. फाइन. ओके. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लाइफ साइकिल, हम लोग वहां पे लाइफ साइकिल यूज करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट. ओके, हम लोग यूज इफेक्ट से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट. ओके,
I means there is a no need to track the functionality that what you have done over there. Okay, आपने आपको लाइफ साइकिल ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. ओके, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एक ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है. ओके, यहाँ पे हम लोग इसको एक बाइंड करेंगे. ओके, वी विल जस्ट बाइंड दिस फंक्शन ओवर ओवर हियर. ओके, तो हम लोग इसको फंक्शन को बाइंड करते हैं. ठीक है, लेट्स बाइंड दिस फंक्शन. Okay, I will just do the significant changes over here. अब मैं यहाँ पे फंक्शन को यूज नहीं करना चाहता. ओके, आई वांट टू बाइंड द वैल्यू. व्हाट इज द एरर? कौन बताएगा इसमें एरर क्या है? एनीवन? So generally set के set function जो we are using, that is a set name it should be instead of set click. No issue, but you have declared that. Okay. I have just means what they did. I have taken a variable name. Okay, actually they have taken the variable count. So if I will instead of a name, if I use the count, then also it is okay. But here we are having the two errors. Which are these two errors?
Just focus here. You have used this entire return, means inside this function you have written this entire return in a use effect. Okay, so what I did here, I'm not using the use effect. Okay, मैं यहाँ पे use effect तो use नहीं कर रहा. I'm not using that. Okay, so that is a mistake that I'm used to there. If I'm just writing the count. Okay, तो जो count मैं इसके function के बाहर लिख रहा हूँ. Okay, so that is giving the error. If I will just remove this, okay, मैं यहाँ से अगर इसको remove करता हूँ, then the what happened? Just a second. No? Yeah. So see, I'm using over here the this value it is been showing that how many times I have clicked on the application. Okay, अगर इसको refresh करता हूँ, so you can see over here that I have used it, that how many times it is been going to change. Okay, but this is not my purpose. My purpose is that I want to write this entire code inside a use effect. Okay, means I don't want to track what is happening in a component. मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है ये इसको मैं ट्रैक नहीं करना चाहता. ओके, सो फॉर दैट पर्पज आई कैन यूज डायरेक्टली द यूज इफेक्ट. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करके देखेंगे. ओके, जस्ट टू ट्रैक what is happening inside a component. Okay, so here I will use effect. Okay, so let us check. Okay, so use effect is a one method. So I will just inside this method we will call an arrow function. I am using over here the backticks. Huh? When to use backticks? Backticks कब use करते हैं हम लोग? Yes. Anyone knows when to use backticks?
No one knows when to use backticks. Hello. No, sir. Okay, fine. I will tell you. We can use the backticks when what I will do, I will simply just write it from here. Okay, see, we'll use the inspect. ये मैंने console किया है. Okay, so in console you can see the outcome. Okay, मैं click कर रहा हूँ, so you can see that how many times the changes are going to be happen. Okay, so here I don't need, there is a no need for a confirmation, there is a no need to call the life cycle hook. आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका कंपोनेंट माउंट हुआ है नहीं हुआ है. ओके, आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि आपका कंपोनेंट अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, बिकॉज एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय यूजिंग द यूज इफेक्ट. ये सारी चीजें कौन हैंडल करेगा? दैट विल बी हैंडल्ड बाय द यूज इफेक्ट. ओके, so use effect, it is the best alternative to handle the functionality of the, it is a best alternative to handle the functionality of the we can say that it is a for the tracking the life cycle loop. Okay, then now the question is when to use backticks. हम लोग backtick कब use करते हैं? Generally, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हियर द नेम इज अ वन वेरिएबल and I want to inside a variable means I want to use this statement. Okay, if I will use the simply like a string. Okay, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक string की तरह represent करता हूँ. I will use it like a string. Okay, so that value is not going to become. Let me rerun. So see, here you can obtain that the value is not coming. If I am just clicking only the console statement, entire string is consoling, क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट हुआ है. सो आई वांट टू use this string as an, I want to represent this you clicked times as a string. मैं इतना जो स्टेटमेंट है you clicked times, I want to show it as an string, but the here I want to represent the value of a variable. मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. देन इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कोड यू कैन यूज द बैकटिक्स लाइक दिस. आप वहाँ पे बैकटिक्स यूज कर सकते हो. बैकटिक्स विल अलाउ यू टू represent the value of a variable as an along with its value. उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अलाउ करेगा, और उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉलर का साइन लोगे. ओके, सी if I will just remove the dollar sign, then it is also binded like a variable. Okay, if I will give the dollar sign over here, okay, then the dollar sign will represent that it is a value. ये क्या है, ये एक वैल्यू है.
So see in console that if I'm just initiating from the beginning, I'm getting the output that how many times I have clicked, right? So this is a purpose of using the user effect, that you can neglect your life cycle hook, means there is no need to track the life cycle hook, all the so for example mounting, unmounting, updating, there is no need to just check that. Okay, so these are some hooks that we have gone through. Okay, ये कुछ हुक है, लाइफ साइकिल हुक है जिसके हम लोग, इसके थ्रू हम लोग गए. ओके, so particularly the bottom line is that use effect and the use state are the two important life cycle hook. Okay, and that you can use it in a function based component, not in a class based component. हम लोग इसको function based component में use कर सकते हैं, right? Is this clear? Hello. Yes, yes sir. Sir, can you explain the back quick, please, sir? uh, Pardon sir. Back quick, you told a back quick. Okay, okay, I will explain it one more time. And back quick and dollar is same or different? No, no. uh, Particularly I will tell you both. Both. Okay, मैं दोनों चीजें. Okay. Suppose what I want to do from the beginning, I will explain. Okay, no issue. Suppose I want to write over here. You have clicked. Fine. So in application, if I will click over here, you have clicked. Okay. क्लॉक हो गया है, मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ. Okay, you have clicked. I'm getting that output. See, you have clicked. Okay, now I am yet to click. अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है. Okay, but it is been appearing over here. Okay, जैसे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद ही मुझे यहाँ पे आउटकम आ रहा है, क्योंकि इट इज शोइंग दैट आई एम यूजिंग यूज इफेक्ट. मैं वहां पे यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये शो कर रहा है कि आपने, आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, हो गया है, माउंट हो गया. ओके, नाउ माय इंटेंशन इज दैट I want to track here the value that how many times I have clicked. मैं स्ट्रिंग के अंदर कितने टाइम मैंने क्लिक किया है वो भी काउंट करना चाहता हूँ. ओके, सो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द वेरिएबल. ओके, मैं यहाँ पे वेरिएबल को यूज करूंगा. ओके, तो सिंपली माय वेरिएबल वैल्यू इट इज बीन स्टोरिंग इन अ नेम. ओके, नेम नाम का जो वेरिएबल है वहां पे हमने स्टोर किया है. So if I will bind like this, ऐसे अगर मैं bind करता हूँ, so actually my output is running so very successfully. Okay, but I am having only the string. यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक string है. My purpose is to show that how many times I have clicked over here. That is my purpose. Okay, so what I will do, I will put over here the dollar sign. मैं यहाँ पे dollar sign use करूँगा. I have put it the dollar sign. Fine. To represent the value. Dollar generally we use to represent that which value we are storing in a variable. उस वेरिएबल के अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग वहां पे डॉलर साइन लेते हैं. ओके, बट माय इंटेंशन इज अगेन येट टू सॉल्व. अभी अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, बिकॉज हियर नाउ इट इज अपियरिंग लाइक अ डॉलर नेम. माय इंटेंशन इज to show here the value. Okay, so what I will do, instead of this single quote, if I will use the backtick,
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक सिंगल कोट की जगह पे यहाँ पे बैकटिक पुटअप करता हूँ. So the backtick will work, and this particular, can you observe over here that you have, it is a string, clicked is also the string, but it is appearing like a variable. ये जो name है, ये name एक variable की तरह represent हो रहा है. Okay, so see, if I am clearing and running it from the beginning, you have clicked zero, you have zero clicked. If I will just click that, the state is going to be changed. So I can represent the within a string, I can represent any value of a variable. मैं वहां पे string के साथ साथ मैं variable की value को भी क्या कर सकता हूँ, represent कर सकता हूँ. That is a use of backticks. वहां पे हम लोग ऐसे situation में हम लोग backtick use करेंगे. Got it, sir? सर ये यूज कैसे किया सर हमने, मतलब विच की वी यूज्ड, कौन से की से बैकटिक का जो की रहता है ना सर, वो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की वन है ना, वन के बाजू में रहता है. एक्सट्रीम ऑन द कीबोर्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. ये कहाँ पे, वन के पास? हाँ, वन के पास. वन के पास तो ऐड द है सर. ओके ओके ओके, आई गॉट इट सर. ओके, या दिस इज दैट इज अ गुड. सिंबल ऑफ बैकटिक. ओके सर. That I was finding out, sir. I remember at the time of alert. या करेक्ट करेक्ट. At that You time, can actually, we are use not it in getting the alert. value. At that time, I was not getting the value. So there also they are using this alert in this backstick, sir. Right. Right. Okay, thank you very much, sir. Okay, so I hope everything is clear from the chapter. Okay, that we have finished one more chapter over here. Okay, in case of any question related with this, okay, we will connect to tomorrow. We are going to connect tomorrow also. Okay, with the at the same time. Fine. And sir, your means is it okay for you that instead of evening we will connect on the same time? Yes, sir.